New Zealand versus Bangladesh it is, and right now if we are here to discuss with Chirayu Jan on this particular match, Chirayu, New Zealand versus Bangladesh, it has been like दोनों की journey की अगर बात करें इस World Cup, so New Zealand has started pretty well because उन्होंने दोनों मुकाबले अपने जीते, but बांग्लादेश को थोड़े mixed results देखने को मिले हैं, which is number one उन्होंने पहला अपना मुकाबला जीता, दूसरा मुकाबला against England बड़े margin से हारे, which was 137 run, and that was huge because NRR बहुत important role play करता है in big tournaments में. तो बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी वापसी वो करे, न सिर्फ मैच जीतना है बल्कि अच्छा मैच जीतना है, सो दैट एंड में आकर के वो प्रॉब्लम ना है, बिकॉज हर टीम चाहती है कि उनका सफर काफी अच्छा जाए. So what do you think about this today's match, New Zealand versus Bangladesh, who's going to dominate and basically जिस तरीके की पिच है वहां पर आपको किसका गेम ज्यादा फ्लरिश करता दिखाई पड़ेगा, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश? I still feel that New Zealand they have dominated for the two games pretty well, and since this game also marks the return of the legendary batter Kane Williamson, so the team becomes more formidable, and the force becomes eventually more stronger. It gives strength to the side, but the bigger dilemma is who will sit out in place of Kane Williamson. Will it be Will Young, or will it be Mark Chapman, or any other batter? So that is something which will be really something which I'm really looking forward to. But speaking about Bangladesh as well, they started really well when they won the game against Afghanistan. But against when they played against England, that margin of defeat was huge, and it really hurt them because they don't have that sort of stability in their batting lineup. They have batters who can start well, but in carrying on the platform set by the openers or the top order batter, that is something that the Bangladesh team lacks currently. And ये जो चीजें है कि आपका एक पूरा यूनिट तैयार होना चाहिए, especially when you are playing in Chennai, क्योंकि यहाँ पे पिचेस इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है कि शुरुआत में पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, और उसके बाद अगर आप 8वें ओवर से भी स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आई थिंक द टीम्स कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स फॉर देमसेल्व्स. सो दिस इज वेयर बांग्लादेश नीड टू कीप देयर गेम प्लान and match it according to the situation, according to the surface, and get their best 11 into the team and into the game, and their spin well. And I still feel that if Bangladesh are able to win this toss, if Shakib Al Hasan calls it correctly at the toss, so he should bowl first, because it eventually becomes easier to bat second in the night game because of the humid conditions that Chennai offers, and Chepauk has been known to provide assistance to spinners more often, and as we have seen that Bangladesh have better spinners over New Zealand, so that is where Bangladesh can come on top of New Zealand, and it will eventually help them. Right, and talking about the toss, हम सभी को पता है कि आज न्यूजीलैंड की तरफ से एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, which is Kane Williamson is going to make a comeback as the captain of New Zealand after a long injury जो हमने उनको क्रंचेस पर जाते हुए देखा था, और उसके बाद अब वापसी करेंगे केन विलियमसन एज द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड. बट सिंस वो वापसी कर रहे हैं और ये कंफर्मेशन भी आई थी, हम लोगों ने न्यूज में सुना भी था कि ही इज गोना मेक अ कमबैक, सो एट व्हाट कॉस्ट किस प्लेयर को हम बाहर जाते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी तक टॉस हुआ नहीं है, हमारे पास अपडेट नहीं आई है. सो फार आपको क्या लगता है कि who's gonna go outside, sit outside, और उसके बाद में फिर उनकी जगह केन विलियमसन आएंगे? अपडेट की आप बात कर रहे थे, तो जैसे ही आप बोल रहे थे उसी समय पे अपडेट आ गया कि द टॉस हैज हैपेंड. केन विलियमसन, द न्यूजीलैंड स्किपर, द रेगुलर न्यूजीलैंड स्किपर, हैज वन द टॉस एंड ही हैज डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. जैसा कि मैंने कहा कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है उसको गेंदबाजी पहले करनी चाहिए, बिकॉज इट इज इजियर टू बैट सेकंड इन चेपॉक बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशंस. हमने पिछला गेम जो यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ उसमें भी देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया 199 पे ऑल आउट हुई. उसके बाद में इंडियंस को जब थोड़ी बहुत लाइट्स थी तब दिक्कत हुई बैटिंग में, लेकिन उसके बाद कोहली और राहुल ने कंफर्टेबली अपनी टीम को दे टुक द टीम थ्रू. सो ये दर्शाता है कि चेपॉक में बैटिंग सेकंड इज ऑलवेज इजियर, एंड बैटिंग अंडर द लाइट्स बिकम्स इजियर, एंड द चेज इवेंचुअली फेवर्स द साइड हु हैज वन द टॉस. सो absolutely correct decision by Kane Williamson, but we are still awaiting that who is going to sit out, and I think he has come in for Kane Williams, Will Young. So that is great news for New Zealand's point of view.
But speaking of guys like Rachin Ravindra, who used to bat at number 3 in place of Kane Williamson, so where will राइट, he bat now? Because उन्होंने अभी तक दोनों मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हम सब उनको यही भी चाह रहे हैं कि पड़ेगा। उन्हें अब नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी। सो एंड ही इज नॉट अ यूजुअल टॉप ऑर्डर बैटर। उन्होंने अभी हुँ, तक अपना जितना भी करियर खेला है अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, उसमें उन्होंने हमेशा नीचे ही बैटिंग की थी, और वार्म अप गेम में उन्होंने ओपनिंग की और उसके अंदर 96 रन बनाए। उसके बाद में उन्होंने 123 रन ही स्कोर्ड इन देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद अगली मैच में भी उनका बल्ले बल्ले और गेंद दोनों से ही प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। सो हुँ, हुँ, दैट इज that is a big headache for New Zealand right now. But I don't think that they should mind it, because they have a batter in the name of Kane Williamson, जिनका नाम ही काफी है अच्छे अच्छे पोजीशन को की खटिया खड़ी करने के लिए, क्योंकि इतने काम एंड कंपोज नेचर से बैटिंग करते थे कि अगर एक दो विकेट शुरुआत में गिर भी जाए तो ये बिल्कुल टीम को संभाल के नैया पार लगाने की क्षमता रखते हैं। और इतने राइट, सालों से हमने देखा है कि काम एंड कंपोज्ड एटीट्यूड, कूल एटीट्यूड जो इनका फील्ड पे होता है, कप्तानी करते वक्त भी और बल्लेबाजी करते वक्त भी, इसी से न्यूजीलैंड को पिछले 8-10 सालों में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि वे अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, 2 बार सेमीफाइनल फाइनलिस्ट रह चुके हैं, रनर अप रह चुके हैं, जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार अरे वो वो चाहेंगे। हार्ट ब्रेक को हम लोग भूल ही नहीं सकते विद न्यूजीलैंड। जो हुआ हम लोगों ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में देखा था, द थिंग व्हिच हैपेंड विद न्यूजीलैंड, बिकॉज वी ऑल कैन फील दैट। अभी तक वो कई बार चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या वाकई ऐसे रिजल्ट होना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली हमने देखा केन विलियमसन, द जेंटलमैन केन विलियमसन, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ रूल एंड कंप्लीटली लाइक व्हाटएवर हैज हैपेंड, यू कैनॉट रियली फाइट ओवर इट, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ द रूल एंड यू कैनॉट गो अगेंस्ट दैट, which shows the character of Kane Williamson, the cricketer itself, ki how much mature he is as a cricketer. But since we were talking about Kane Williamson and other things about this match, I'm here to tell you some numbers as well, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है when it comes to New Zealand versus Bangladesh. Here's my first stat for you, which is the head-to-head between New Zealand and Bangladesh. दोनों ही टीम्स ने अभी तक 41 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 30 मैचेस जीते हैं, बांग्लादेश ने 10 मैचेस अपने नाम किए हैं और नो रिजल्ट रहा है एक मुकाबले का, व्हिच मींस कि अभी तक तो न्यूजीलैंड डोमिनेट किया है। बट द थिंग कम्स इन चिरायू, सिंस बांग्लादेश इज अ सब कॉन्टिनेंट कंट्री और हम लोग जो कंडीशंस हैं जो इंडिया में आप देखते हैं वैसे ही समहाउ मोर और लेस सेम आपको बांग्लादेश में देखने को मिलती है। सो इज इट लाइक न्यूजीलैंड जरूर डोमिनेट करता आया है इनिशियली ओडीआईस में, बट आज की जो कंडीशंस है बांग्लादेश ज्यादा फेमिलियर होगा उनसे। सो हाउ डू यू फील कि इस पर्टिकुलर मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा इन टर्म्स ऑफ कंडीशन? I think the toss was really crucial for Bangladesh to, make some early mark into the game. But since they have lost the toss, they should not be more worried. They should just focus on their batting and putting a decent, manageable total on the board, because they have some really good spinners in the likes of Shakib Al Hasan. They have Right. Mehdi Hassan Miraz. They have Mahedi Hassan. So these three spinners are bowling really well, not just in the World Cup thus far, but over the past 12 or 15 months. So that really shows that the kind of dominance that the Bangladesh spinners will have over New Zealand. And because New Zealand don't have that much level of experience with their spin, because they're not playing SOD. I'm not sure if he's playing tonight, but they have Rachin Ravindra. They have a part-time spinner in the name of Glenn Phillips. So we really don't know who is going to be bowling. And so just because of that factor, that Bangladesh have better spinners, I think they can still make it. Even after they have lost the toss, they can still make it if they put a decent, manageable total on the board. And going by the surface that MH Chidambaram Stadium offers, I think 280 will be a really good score on this surface, if they are to defend this, and if they are to fancy their chances. So yeah, that is what I have to say right now. But we are moving to the playing 11 right now. Okay. राइट, सो प्लेइंग 11 भी अनाउंस हो चुकी है। मैं आपको बता देती हूँ बांग्लादेश के एंड से हमें देखने को मिलेंगे लिजिंदास तंजीन हसन, इनके ऊपर बात हो रही थी, नजमुल हसन शंटो, मेहंदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, तौहिद हिरदोए, महमदुल्लाह, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। इसके अलावा न्यूजीलैंड के एंड से अगर हम बात करें तो डीवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, उसके बाद केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी
और लॉकी फर्गसन और ट्रेंट बोल्ट. सो हम बात कर रहे थे इश सोडी की, वो मुझे 11 में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. ही इज नॉट पार्ट ऑफ द 11 टुडे. सो न्यूजीलैंड के लिए आज डेफिनेटली एक चैलेंजिंग डे होगा, बिकॉज एक तो मुझे ये भी लगता है कि रचिन रविंद्र को जिस तरीके से ओपनिंग में ट्राई करके, सिंस एक ट्रेजेडी थी कि केन विलियमसन वाज नॉट अवेलेबल, तो न्यूजीलैंड को उनको ट्राई करना पड़ा. और फिर हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर गेम प्ले दिखाया है, कभी कभी ये चीजें आपके लिए बून की तरह साबित हो जाती है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013, हमने वहां पर पहली बार इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन को अपनाया गया था, विच वाज एन एक्सपेरिमेंट. और हमें आज तक पता है कि उसका फायदा कितना हुआ है इंडिया को, कि हमने उन दोनों को काफी लंबे टाइम तक ओपन करते हुए देखा. वही न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें, ट्रेजेडी है कि रचिन रविंद्र को ऊपर आकर खेलना पड़ा बिकॉज केन विलियमसन अवेलेबल नहीं थे. बट अभी देखिए वो कितने अच्छे साबित हुए न्यूजीलैंड टीम के लिए. आई थिंक दैट्स अ बून फॉर देम. बट डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा पहले सॉर्ट हो जाना चाहिए था, बिकॉज वर्ल्ड कप इज अ बिग टूर्नामेंट. यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर यू कम अप विद फुल फ्लेज्ड सॉल्यूशंस. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या न्यूजीलैंड को ये पहले ही समझ जाना चाहिए था, या पहले एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए थे? क्या न्यूजीलैंड उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करती जब व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल सीरीज? इज इट लाइक दैट हियर? I really don't feel that this should be a big problem, because if Rachin Ravindra is opening the batting, uh, we know we have seen his performances over the past 6 or 7 ODI games. He played well against in the series against England as well. So that is something that where Rachin Ravindra really fills in the boots of any opening spot that he has to fill in. And on top of that, he's a really good spinner. He has a really good orthodox arm, so he utilizes that very well. He has been known to the Indian conditions. He has been there for the past 15 or 20 days, so he has gotten accustomed to the conditions. So I think he really utilizes skills really well with bowling and with batting also. But if you're talking about uh, should really, New Zealand really have sorted this thing out, that who is going to open, I think just because Kane Williamson was sitting out there for the first couple of games, that is why Rachin Ravindra had to bat, at number 3. So I think New Zealand, on back of their mind, always had this thought that Rachin Ravindra is going to be our opener throughout the tournament. But since in the absence of Kane Williamson, he had to fill in the boots at number 3, and that is where Will Young got a place in the 11. So we really don't know how he's going to fare throughout the tournament. But going by the first couple of games, the future really looks bright for the upcoming star, and he's surely going to be one of the most the best emerging all-rounders to come out in world cricket in a few years from now. डेफिनेटली. और आज के मुकाबले में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी तरीका होता है टू नो द पिच रिपोर्ट. सो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा, और वहाँ की पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उस स्टेडियम मोस्टली फेवर करेगा फास्ट बॉलर्स को, बट उसके बाद में फिर हम स्पिनर्स को डोमिनेट करते देख सकते हैं मिडिल ओवर्स में. सो पेसर्स हैव क्लेम 205 विकेट्स व्हाइल स्पिनर्स हैव टेकन 129 विकेट्स इन 24 ODIs at this ground. Batting first won 14 times while chasing one in 9 matches. There was one match that ended with no result. So एम ए चिदम्बरम स्टेडियम का मैंने जिस तरीके से आपको पिच रिपोर्ट बताई, इसके बाद मैं बताती हूँ प्लेयर टू वॉच आउट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग द मैच, डेफिनेटली पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं जिनसे उम्मीद होती है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसपे हम सारा अपनी सारे स्टेक्स लगाकर बैठे होते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो ये खिलाड़ी संभाल लेगा. सो वी हैव प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम न्यूजीलैंड के एंड से, विच इज डैरिल मिचेल. 31 मैचेस में उन्होंने 1000 प्लस रन्स बनाए हैं, 46.65 का एवरेज है, 92.66 का स्ट्राइक रेट है, और 350s और 400s अपने नाम कर चुके हैं. वहीं अगर बांग्लादेश के एंड से बात की जाए तो शाकिब अल हसन इज दैट वन प्लेयर जो रन बनाना भी जानते हैं, विकेट्स लेना भी जानते हैं, फील्डिंग करना भी बखूबी जानते हैं, बेसिकली ऑल दो ट्रेड्स जो कि आपको एक मैच जिता सकता है. और बांग्लादेश की तरफ से हम शाकिब अल हसन को आज परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, और उनसे हमें काफी उम्मीदें होंगी. नाउ द गोल्डन क्वेश्चन कम्स, चिरायू, other than these two, which two player from each team do you think is going to be the player to watch out? For me, from Bangladesh, I would. It's a no-brainer that I will pick Mehdi Hassan Miraz, because he has been a really good all-rounder for Bangladesh over the last couple of years. He has batted where he has scored 100 at the top, 100 in the middle order, and he has taken crucial wickets at crucial junctures of the game. So that is the one player that I'm really looking forward to in this game from Bangladesh. And from New Zealand, I would, it again is a no-brainer that I will be picking Kane Williamson.
because he's the captain. He has led the team for almost like it's his third World Cup as a leader now. So he knows how to go big in the tournaments. He has played well. He keeps his team above himself, and that is where his game. He doesn't care about how much run I'm going to score. If my team is going to win with whatever the contribution I can make, so that is the thinking that Kane Williamson enters the game with. So these are the two players that I'll be looking forward to in this game, and it's Kane Williamson's first game after a really long time in professional form of cricket. So Definitely. this is something that all the cricketing world will be looking after, because he's coming after a long injury Great. which lasted for almost 6 or 7 months, which happened Yeah. during the first game of the Indian Premier League 2023, and Yeah. now he's coming back into a big tournament like World Cup. So a Right. really crucial game for him tonight. Right, and he's also the only captain from the last edition who's continuing as the captain in this World Cup. So it's really special to have him back. But एक बार सोशल ट्रैकर की तरफ नजर डालते हैं कि ट्विटर की दुनिया पर आफ्टर ऑल, एक तो मेरे मुंह से अभी भी ट्विटर निकलता है, इट इज एक्स रात्सी एक्स। सो एक्स की दुनिया में क्या चल रहा है और क्या कॉन्वर्सेशंस जारी हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के इस मुकाबले को लेकर। देखते हैं सबसे पहला ट्वीट यहाँ पर क्रिकचैकर का, मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स फॉर न्यूजीलैंड इन 2023 ओडीआईज 6 हमने देखा है स्कोर फ्रॉम विल यंग, डीवन कॉनवे की तरफ से 5 आए हैं स्कोर्स, वहीं टॉम लैथम ने 4 और डैरिल मिचेल ने 4 टाइम्स 50 प्लस स्कोर हासिल किया है। और विल यंग जो कि इस यहाँ पर लीड कर रहे हैं चार्ट को, बट आज खेलते दिखा नहीं देंगे बिकॉज केन विलियमसन की वापसी हुई है एट हिज कॉस्ट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर ट्वीट। CricTracker की तरफ से ट्वीट, आफ्टर बीइंग आउट ऑफ एक्शन फॉर 6 months due to an ACL injury, we are going to see Kane Williamson back on the field against Bangladesh। और हम देख सकते हैं न्यूजीलैंड स्किपर Kane Williamson is all set to go against Bangladesh in Chennai। Cricket fans, are you excited to see him back on the field? And who's not going to be excited, because it's Kane Williamson after all, and we all love him, to see him back on the field। CricTracker का एक और ट्वीट, Kane Williamson is poised to play his first game in the ODI World Cup, and we all are really, really excited to see him for making a comeback, because we all wanted this gentleman to play the game and grace the game even, because हम सभी जानते हैं कि he is the only captain from the last edition who is continuing as the captain of this edition as well। So चिरायु, thank you so much for joining me here। और कॉन्वर्सेशंस जारी रहेंगे, क्रिकट्रैकर की वेबसाइट पर आप जाकर के इस कॉन्वर्सेशन को जारी कर सकते हैं, लाइव ब्लॉगिंग आप लोगों के लिए जारी है। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर के हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें टू गेट मोर एंड मोर गुड कंटेंट राइट अवे। और टेलीग्राम चैनल पे चेक कीजिए, और इसके अलावा यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइबर जरूर हमारे बनिए। तब तक के लिए बने रहिए क्रिकट्रैकर, देखते रहिए क्रिकट्रैकर का इन द एयर शो, क्योंकि हम मैच के बाद में तो लौटेंगे। चले चिरायु मैच देखने। जी, ऑल एक्साइटेड। पोस्ट मैच में लौटते हैं हम सभी आपके साथ, देखते रहिए क्रिकट्रैकर्स इन द एयर शो।